Hello students, welcome to Gyanm Amritsar. In today's video, I will solve the previous question paper of Ssc Cgl, and this question paper was asked in the year 2022. So let's get started. Students, you might be familiar कि जब एग्जाम होता है तो there are different types of question asked together. तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स दैट आई कैन शेयर विद यू कि आप सबने वो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन ढूंढ पढ़नी। प्लीज डू नॉट ट्राई टू सॉल्व एनी क्वेश्चन विदाउट रीडिंग द इंस्ट्रक्शंस, बिकॉज समटाइम द क्वेश्चन लुक्स समथिंग एल्स बट द इंस्ट्रक्शंस से समथिंग एल्स। तो आप सभी ने जब ये क्वेश्चन ट्राई करना है सॉल्व करने का, सो इट इज माई हम्बल सजेशन कि आप सबने इंस्ट्रक्शंस बड़ी केयरफुली रीड करनी है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड फर्टाइल इन द गिवन सेंटेंस। तो ये इस क्वेश्चन में भी पूछा जा रहा है कि ये जो वर्ड फर्टाइल है इसका हमने ऑपोजिट वर्ड देखना है। तो लेट्स सी द ऑप्शंस। क्वेश्चन स्टेटमेंट है, द टीचर आस्क्स व्हीट इज ग्रोन इन विच काइंड ऑफ लैंड, रिच, वेट, barren or fecund। So we have four options given and we have to choose one correct options which is the antonym of this word fertile। देखो ये जो ये क्वेश्चन है बेसिकली ये आप डिपेंड करता है आपकी वोकैबुलरी पे। अगर आपको वर्ड का मीनिंग पता है ओनली देन यू कैन फाइंड द राइट आंसर। ओके, तो फर्टाइल इज अ वेरी कॉमन वर्ड अदरवाइज, इसका मतलब है हिंदी में उपजाऊ होना, जिससे आप जैसे आप खेती करते हो हम बोलते हैं इट्स अ वेरी फर्टाइल लैंड। तो द ऑप्शन विच आर गिवन वो फिकंड है, रिच है, बैरन है, वेट है। इसमें दो तीन वर्ड तो बड़े कॉमन है, जैसे रिच और वेट, ये तो सभी को पता ही होता है। रिच मतलब ये ठीक होता है, अच्छा, अमीर होता है, वेट मतलब गीला। तो ये इसका ऑपोजिट तो नहीं होता फर्टाइल का। जो वर्ड है फीकन, फीकन का मतलब ही सेम होता है एक्चुअली, इट इज वेरी क्लोज टू द फर्टाइल वर्ड, इट इज सिनोनिम ऑफ फर्टाइल वर्ड। तो जो लास्ट वर्ड बच गया वो है बैरन। बैरन का मतलब होता है इट्स ए लैंड ऑन विच फार्मिंग इज नॉट पॉसिबल, हिंदी में इसको बंजर जमीन बोल देते हैं। तो जो फर्टाइल होता है उपजाऊ, इसका ऑपोजिट क्या रहेगा, इसका ऑपोजिट रहेगा बैरन। तो बैरन इज द राइट आंसर। राइट, तो इसमें आंसर रहेगा बैरन, बैरन इज द राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द correct passive form of the given sentence, the manager explain the latest assignment to Lana। अब इसमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ जो एक्टिव फॉर्म में दिया हुआ है, उन्होंने बोला कि हमें इसकी पैसिव फॉर्म फाइंड करनी है। एक्टिव और पैसिव जैसे स्टूडेंट्स को पता ही होना चाहिए कि ये वॉइस के पार्ट होते हैं, एक स्टेटमेंट एक्टिव होती है और दूसरी पैसिव होती है। तो ये हमारी स्टेटमेंट एक्टिव में दी हुई है, द मैनेजर एक्सप्लेन द लेटेस्ट असाइनमेंट टू लर्नर। अगर आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ रहे हो तो आपको पता लग गया होगा कि इसमें जो वर्ब है दैट इज सेकंड फॉर्म। राइट, सब्जेक्ट के बाद उन्होंने सेकंड फॉर्म दी हुई है। तो सेकंड फॉर्म आपको पता है सिर्फ पास्ट में यूज होती है, तो ये पास्ट में ही जाएगा। तो आई विल गिव अ वेरी सिंपल टिप। इसको पहले रादर देन फाइंडिंग द करेक्ट ऑप्शन, आपने पहले रॉन्ग ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना है। इट्स कॉल्ड एलिमिनेशन प्रोसेस। तो अब ये जो हमारा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, इसमें सेकंड फॉर्म दी हुई है और सेकंड फॉर्म हमारी आती है पास्ट इंडेफिनिट में। राइट, तो पास्ट इंडेफिनिट अगर एक्टिव में तो उसका पैसिव बनेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाला हेल्पिंग वर्ब लगा के। तो ऑब्वियसली उसमें देखो हैड बीन वाला तो आएगा नहीं, ये दोनों हैड बीन वाले ये तो एलिमिनेट हो गए इसमें। ठीक है, बाकी बचा हैड, ये भी परफेक्ट में यूज होता है, ये भी एलिमिनेट हो गया। क्या ऑप्शन बच गया हमारा, द फर्स्ट वन विच सेज द लेटेस्ट असाइनमेंट वाज एक्सप्लेन टू लर्नर बाय द मैनेजर। तो आई वुड रेकमेंड दिस टेक्निक कि आप रादर देन फाइंडिंग द करेक्ट ऑप्शन इन द फर्स्ट प्लेस ना, आप पहले एलिमिनेट कर दिया करो। Sometime it really saves your time। ठीक है, so this is the answer, the latest assignment was explained to Lana by the manager। Let's move on to next question। Third question कह रहा है, now select the most appropriate synonyms of the given word। synonym मतलब we have to find the word with similar meaning। Students, be very clear in your mind, अगर आपकी vocab strong नहीं है तो you will struggle in these type of question। so make sure your vocab should be strong enough। right, about a transient, ट्रांजिएंट इसको प्रोनाउंस करते हैं। ट्रांजिएंट मीन व्हाट, ट्रांजिएंट मीन समथिंग व्हिच इज शॉर्ट लिव्ड, टेम्पररी। ठीक है, तो मैंने आंसर बोल भी दिया, वैसे फिर भी वर्ड देखते हैं क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म, टेम्पररी, ट्रांसमिट, ट्रैप। अब ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है टू चेंज समथिंग। राइट, तो दिस कैन नॉट बी द राइट आंसर।
ट्रांसमिट होता है कुछ बाहर निकालना, इट वाज ट्रांसमिट, रेज वर ट्रांसमिटेड। ट्रैप होता है कोई चीज फंसाना, ट्रैप। अब टेम्पररी होता है विच इज समथिंग शॉर्ट लिव्ड टेम्पररी, ठीक है। तो इसका आंसर करेक्ट रहेगा विच इज द नो दिस ट्रांजिएंट, ओके। फोर्थ वन, नाउ द क्वेश्चन सेज सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इन द क्वेश्चन हमारे पास इनडायरेक्ट फॉर्म दी हुई है, हमने उसमें से डायरेक्ट फॉर्म ढूंढनी है ऑप्शन में से, ठीक। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। शी आस्क्ड मी व्हाई आई हैड बीन स्मोकिंग दैट डे। अब ये जो इनडायरेक्ट फॉर्म है, अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हो, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ दैट इज हैड बीन, और हैड बीन किस में यूज होता है, हमारा होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो अगर हमारी इनडायरेक्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नरेशन का रूल है कि अगर आपका एक्टिव या जो डायरेक्ट स्पीच है अगर वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है, उसका इनडायरेक्ट बनेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ये रूल है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो ध्यान से सुन लो। अगर आपकी डायरेक्ट स्पीच पास्ट कॉन्टिन्यूअस में दी हुई है तो इनडायरेक्ट मस्ट बी इन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो सबसे पहले तो फिर एलिमिनेशन करते हैं। ये पास्ट में है तो ये प्रेजेंट वाला तो हो ही नहीं सकता है, इसको आंखें बंद करके आप क्लोज कर दो, पता लग जाएगा। इसमें कोई हेल्पिंग, ये भी बंद हो गया। अब हमारे पास दो बच्चे हैं और दोनों पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है। देखो फर्स्ट है शी सेड टू मी व्हाई वर यू स्मोकिंग टुडे, शी सेड टू मी व्हाई वर यू स्मोकिंग दिस डे। तो फर्स्ट और फोर ऑप्शन ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, द ओनली डिफरेंस इज दिस वर्ड। ये वाला वर्ड है और एक ये वाला वर्ड है। अब ये हमने देखना है हम क्या लगाएंगे। देखो जो अगर डायरेक्ट में टुडे दिया हो तो उसका इनडायरेक्ट बनता है दैट डे। दिस डे का भी दैट डे हम चेंज कर देते हैं। बट व्हेन यू स्पीक सम डायरेक्ट फॉर्म, आप कभी नहीं बोलते व्हाट आर यू डूइंग दिस डे, हम बोलते हैं व्हाट आर यू डूइंग टुडे। हम ऐसे बोलते हैं, दिस इज अ मोर फॉर्मल वे टू स्पीक। तो इसमें जो फॉर्मल वे है व्हिच इज मेकिंग सेंस इज टुडे, ये वाला ऑप्शन इज। तो क्लियर कट एलिमिनेट हो गया, दे वर नॉट मेकिंग सेंस, इसमें कंफ्यूजन थी। सो दिस इज अ मोर फॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग द डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। इसका आंसर रहेगा ए वाला, शी सेड टू मी व्हाई वर यू स्मोकिंग टुडे। नेक्स्ट वन, choose the option that can substitute the underlined segment correctly and complete the meaning of the sentence. So we have a sentence, let's see. Navika is a superb and impressive child in her class. So the underlined word है वो हमारा superb and impressive, ठीक है। और बात हो रही है as a child in a class as a student. So which is the right closest word for these underlined word? Options are splendid, brilliant, dazzling, vivid. These are all basically positive word. ये भी positive word है, but they have a different interpretation. इनकी सभी का meaning different है। This is splendid का मतलब होता है कुछ शानदार, कोई बढ़िया। Brilliant, again, normally this is the word which we associate with the student. She is a brilliant student in my class, right? Dazzling, something which is shining, right? So it cannot be shining here. Vivid, something which is clear. Again, it doesn't make sense here. So I think the most appropriate option out of these four words is brilliant. Because this is the word normally you associate with the students, that she's a brilliant student in my class. So this is the answer, brilliant here. Select the most appropriate antonyms of the given word. Now we have to choose the opposite word of this, casual. Options are spiritual, personal, formal, traditional. Again, casual, see, sometimes we have heard the word but we are not familiar with the meaning. This is very common scenario. वर्ड सुने होते हैं बट हमें मीनिंग नहीं उसका पता होता। देन यू कैन थिंक ऑफ दैट वर्ड इन ए सेंटेंस। जैसे हम बोलते हैं शी इज कमिंग इन ए कैजुअल ड्रेस, यू नीड टू कम इन ए कैजुअल क्लोथिंग। तो कैजुअल का ऑपोजिट क्या होता है? अगर आप कैजुअल में आ रहे हो, नहीं कैजुअल में नहीं, आपको फॉर्मल में आना है। दिस इज अ वेरी कॉमन सिचुएशन। उसमें कैजुअल का ऑपोजिट हमें साफ साफ दिया हुआ है, फॉर्मल। स्पिरिचुअली समथिंग आध्यात्मिक, पर्सनल नहीं हो सकता, ट्रेडिशनल नहीं हो सकता। तो फॉर्मल इज द राइट ऑप्शन, राइट। कैजुअल का ऑपोजिट है फॉर्मल। Select the appropriate option to replace the underlined word with the adverb of time. तो क्वेश्चन है, हमारा स्टेटमेंट है हमारे पास, I went to Paris regularly. अब हमने इसमें क्या करना है? हमें एक appropriate option चूज करनी है given option में से to replace this word with the adverb of time. तो options क्या है? Twice, often, yesterday, happily. देखो ये सारे एडवर्ब हैं, बट इफ यू लुक एट द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, वो कह रहा है वी हैव टू रिप्लेस द वर्ड विद एडवर्ब ऑफ टाइम। अब ये वाला ऑप्शन है तो एडवर्ब, बट दिस इज नॉट एन एडवर्ब ऑफ टाइम, तो क्लियर कट ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, इट डजंट मेक सेंस हियर, ठीक है।
आई मीन से एज ए एडवर्ब ऑफ टाइम इट इज नॉट मेकिंग सेंस। तो क्या ऑप्शन बच गया, ट्वाइस, ऑफ्टन और यस्टरडे। ऑप्शन नेक्स्ट को रीड आउट करते हैं, आई वेंट टू पेरिस। हम ऐसे तो नहीं बोलते आई वेंट टू पेरिस ट्वाइस, यहाँ बोलते आई हैड बीन देयर ट्वाइस, हम ऐसे बोल देते हैं मैं वहां 2 बार जा चुका हूँ। ऑफ्टन अगर लगाते हैं तो नॉर्मली वो सब्जेक्ट के बाद आता है, आई ऑफन गो देयर नॉर्मली, ठीक है। yesterday is making sense, like I went to market yesterday, I went there yesterday, so I went to Paris yesterday. This is the right option. ये तो this was not adverb of time, ये तो eliminate हो ही गया, these are not making sense. Next one, select the most appropriate antonyms of the given word. The word is conceit, it should be spoken as conceit, इसको आपने conceit pronounce करना है। कंसीट का मतलब क्या होता है, कंसीट का मतलब होता है लाइक एरोगेंस, एरोगेंस, प्राइड, ठीक है, ये इसके कुछ क्लोज वर्ड है, सिनोनिम वर्ड्स हैं। तो कंसीट का हमने ऑपोजिट देखना है इसमें, ठीक है। तो इसका मतलब है एरोगेंस, घमंड जिसको आप हिंदी में बोलते हो। कंसीलमेंट, कंसीलमेंट का मतलब होता है कुछ छुपाना, तो वो घमंड का ऑपोजिट तो नहीं हो सकता। रिवील, रिवील होता है कुछ बताना, अगेन वो इसका हो सकता है, लेकिन कंसीट का ऑपोजिट नहीं। मोडेस्टी, हाँ मोडेस्टी होता है विनम्रता, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम्बल, जैसे ह्यूमिलिटी आप इसको। तो दिस वन सीम्स अ राइट ऑप्शन, कैन बी छुपा होता है। बट अगेन आई वांट टू री एम्फेसाइज व्हाट आई जस्ट सेड कि अगर आपको ये वाले क्वेश्चन करने हैं, योर वोकैब शुड बी गुड इनफ, योर वोकैब शुड बी स्ट्रॉन्ग। So please, if you are preparing for the exam, try to learn at least 20 to 30 new words every day and repeat them on daily basis. So that will help you to store them in your brain. Because reading them once or twice will not help you. Either you need to read them on daily basis or you can use them in your practical life. So these are the 2 most important way to improve your vocabulary. Okay. All right. Let's move on to next question. Select the option that can be used as a one-word substitute for the given group of words. क्या वर्ड दिया हुआ है, फीलिंग और शोइंग एक्सट्रीम टायर्डनेस। So we have to choose a one word, extreme tiredness. Tiredness हम सबको पता है, जब हम थक जाते हैं कहते हैं we are feeling tired. So we have to see the one word. Okay, let's see the option. Vitalized, nervous, weary, drowsy. हमें इसके लिए वर्ड ढूंढना है टायर्डनेस के लिए, एक्सट्रीम टायर्डनेस के लिए। और वाइटलाइज तो ऑब्वियसली होता है वो एनर्जाइज होता है, वो टायर्डनेस होता नहीं। वाइटलाइज इज योर फीलिंग एनर्जाइज, तो ये तो हो नहीं सकता। नर्वस, व्हेन यू फील नर्वस, ये भी टायर्डनेस के लिए नहीं यूज होता। द लास्ट ऑप्शन दिस डी इज ड्राउजी। ड्राउजी इज व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग स्लीपी, जब आपको सुस्ती नींद आती है तो हम बोलते हैं शी इज फीलिंग ड्राउजी, तो ड्राउजी भी नहीं हो सकता। तो वेरी इज द राइट ऑप्शन। वेरी का मतलब होता है व्हेन यू गेट टायर्ड यू कैन से आई एम फीलिंग बिट वेरी, okay, you can speak like that. So C is the right option. The next one, the question below consists of a set of labeled sentence. Out of the 4 options given, select the most logical order of the sentence to form a coherent paragraph. Okay, so we have a set of sentences. 4 sentences are given, but they are given in a jumbled order. We have to arrange them so that they can make sense, right? So basically you do get these type of question in exam. आपको definitely आएंगे ऐसे question exam में, where you have to rearrange the sentence to make a logical paragraph. अब if you could recall in one of my previous video, मैंने इसके tips बताए थे कि आपको कैसे start करना है। देखो जो starting जो first sentence होएगा, it should not contain a pronoun. इसमें pronoun कोई नहीं होना चाहिए, चाहे he, she, it कोई होना चाहिए। इसमें कोई demonstrative जैसे this, that भी use नहीं होना चाहिए, right? इसमें कोई ऐसा वर्ड जैसे शॉर्ट नेम नहीं होना, मिस्टर शर्मा, ऐसा नहीं होना चाहिए स्टार्ट, बिकॉज उसका फुल नेम फर्स्ट सेंटेंस में होगा, शॉर्ट नेम से दे नेवर स्टार्ट विद द सेंटेंस। तो ये कुछ टिप्स आपको याद रखने हैं। तो लेट अस सी द ऑल द 4 सेंटेंसेस। पहला है वी आर नेचुरली सोशल क्रिएचर। वी नेक्स्ट इज अ बिट ऑफ सॉलिट्यूड एज एवरीवन फ्रॉम थॉरियू टू फॉरेस्ट हैव रिटन अबाउट इज वन ऑफ आवर मोस्ट पावरफुल टूल्स फॉर डिस्कनेक्टिंग एंड रिचार्जिंग। Next one is, this doesn't mean you need to lock yourself away in a room at the end of the day. However, all that time with the people takes it order. So if you look at all these 4 sentences, we have 2 sentences which cannot be the opening sentence of the paragraph. वो कौन-कौन से है? देखो यहाँ पे this दिया हुआ है, this doesn't. So this is a pronoun, demonstrative pronoun. It cannot be the opening sentence of any paragraph. तो अगर कोई ऑप्शन R से है तो आप उसको पहले से एलिमिनेट कर दो। यहाँ पे R से कोई ठीक हो नहीं है यहाँ पे, ओके ये तो नहीं।
अब no paragraph, no like if you're given 4 paragraphs or 5 paragraphs, no line statement start with however. No paragraph start with these adverbs however. तो अगर ऐसे से कुछ है देखो, look at the option C, it start with the S, so very quickly you need to eliminate it because this cannot be your opening sentence of the paragraph. इसको आपने elimination कर देना. बाकी तीन है, एक P से स्टार्ट हो रहा है, Q से और फिर P से, ये हम देख सकते हैं. So let's read out the P line. P कह रही है we are naturally social creature. It perfectly looks fine. It can be the opening statement. अच्छा अगर आप Q से भी देखो, a bit of solitude as everyone from Thoreau to Proust have written about is one of our most powerful tool. अब see this can be your opening statement because there is no problem like that of pronoun या adverb कोई नहीं दिया हुआ. It can be the opening statement. But let's see which one is more logical. अगर हम पहले P वाली ऑप्शन पढ़ के देखें, एक P क्या हुआ है और दूसरा PS है. सो P क्या देखते हैं, we are naturally social creature, a bit of solitude as everyone. यहाँ P के बाद क्या था Q, यहाँ P के बाद S दिया हुआ है. We are naturally social creature, S है. However, all that time with the people takes it order. यहाँ पे takes it all भी आता है, takes it order. अब देखो यहाँ पे इसने बोला सोशल क्रिएचर. सोशल क्रिएचर का मतलब है when you're mingling, mixing up with the people. So this one is absolutely like making sense here. We are naturally social creature. However, all that time with people takes it order. उसके बाद क्या था, P के बाद हमारा S है, फिर Q. A bit of solitude as everyone from Thoreau to Proust have written about is one of our most powerful tool for disconnecting and recharging. देखो अब यहाँ पे बात कर रहा है डिस्कनेक्टिंग, अलग रहने की. एंड इफ यू लुक एट दिस पार्ट, ये भी यहाँ पे कह रहा है इट डजंट मीन यू नीड टू लॉक योरसेल्फ. तो लॉक योरसेल्फ इज आल्सो काइंड ऑफ डिस्कनेक्शन. बट वही कह रहा है कि डिस्कनेक्ट का मतलब ये नहीं है कि यू नीड टू लॉक योरसेल्फ. So this one is also coming kind of symmetry here. So I think the right option we have found now. We are naturally social creature. उसके बाद आएगा S वाला. However, all that time with people takes it order. A bit of solitude, but this doesn't mean. So P, S, Q, and R is the right option. Okay. Just a moment. Okay. So let's move on to next question. Rearrange the part of sentence again in correct order. Michael holding who? So again we have been given 4 statements. First is 20 years has finally drawn curtains on commentary panel for more than was a member of Sky Sports, is a stint behind the microphone. So again I think it should be very easy to find the answer. Why? Because we are given the opening part is Michael holding who. अगर आप इसको ध्यान से देखो तो who के बाद क्या आ सकता है, who 20 year is not making sense, who commentary not making sense, who yes this is making sense, Michael holding who was a member. तो हमारा the who his भी नहीं आ सकता. So very clearly it shows the first statement should start with the R. And if you look at all the 4 options, there is only one part which start with the R. This is A. बाकी कोई Q से start हो रहा है, कोई S से start हो रहा है, कोई P से start हो रहा है. So this is very easy. It's very time saving technique. आपने इसको पढ़ना है. Michael holding who. Who के बाद आपने देखना है कोई statement है वो start हो सकती है. This one is not making sense. Again B is not making sense. This one is also not making sense. So you need to start with Michael holding who was a member of the Sky Sports. आगे क्या है, आर के बाद Q. Sky Sports commentary panel for more than 20 years, drawn curtains on his stint behind the microphone. So R, first we R, then we have Q, then P, right? And for those who are not familiar with the meaning of these sentences, drawn curtain का मतलब होता है to stop doing something. ठीक है, बंद कर दिया उसने. ठीक, stint मतलब जो उसने वहाँ पे he was working there behind. He was basically a commentator, so he has drawn curtain matlab he has stopped doing commentary now, right? Next one, select the option that expresses the given sentence in passive voice. Again we have active passive situation. Robin rolled the marble through a small plastic piece. Again if you look at the statement, it start with the second form, matlab past में start हो रही है. तो ऑब्वियसली द आंसर शुड बी इन पास्ट. पहले हम देखिए कोई प्रेजेंट में तो नहीं है, कोई नहीं, सारे पास्ट में है. अब वो क्या किया उसने, रोबिन रोल्ड द मार्बल. लुक एट दिस इज कंप्लीट सेंटेंस, राइट? रोबिन रोल्ड द मार्बल थ्रू अ स्मॉल प्लास्टिक पाइप. अब रोल क्या किया, मार्बल रोल किया है. बट इफ यू लुक एट दिस बी ऑप्शन, वो
तो यहाँ पे कह रहा है कि स्मॉल प्लास्टिक पाइप वाज, पाइप नहीं रोल करी, इसने मार्बल रोल किया है, तो बी हैज टू बी रॉन्ग ऑप्शन। इसके अलावा और द मार्बल थ्रू वाज रोल्ड बाय रॉबिन। तो देखिए इसको इसको ट्रांसलेट करते पहले, तो चेंज करते हैं। द मार्बल वाज रोल्ड बाय रॉबिन है कुछ यहाँ पे, द मार्बल वाज रोल्ड बाय रॉबिन, लेकिन यहाँ पे इन कर दिया, बट यहाँ पे थ्रू दिया हुआ है, तो यू कांट चेंज दिस प्रपोजिशन हियर, हैज टू बी रॉन्ग। आगे देखिए, द मार्बल वाज रोल्ड थ्रू अ स्मॉल प्लास्टिक, दिस वन इज मेकिंग सेंस, ये दिस वन, द मार्बल वाज रोल्ड थ्रू अ स्मॉल प्लास्टिक पाइप बाय रोपिंग, दिस वन इज मेकिंग सेंस। पहले इसको आपने कर लेना और बाकी एज इट इज रहने देना। द मार्बल वाज रोल्ड थ्रू अ स्मॉल प्लास्टिक पाइप, दिस वन इज मेकिंग सेंस, सी इज द राइट ऑप्शन। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन idiom, ये एक idiom है, बैग एंड बैगेज। ऑप्शंस आर विद बर्डन, विदाउट एनी एम, विदाउट हैप्पीनेस, विद ऑल ऑफ वंस पोजेशंस। बैग एंड बैगेज इज अ वेरी कॉमन idiom, जिसका मतलब होता है, पंजाबी हिंदी में बोलते हैं बोरिया बिस्तर लेके चले जाना, तो अपना सारा सामान लेके चले जाना। तो इफ यू लुक एट द ऑप्शन क्लियरली इट शोज द आंसर इज अपना सारे सामान के साथ बोरिया बिस्तर। Select the most appropriate option to fill in the blanks. It is very difficult for her to dash. We have four options: keep a secret, touch a secret, make a secret, or cry a secret. It's very common collocation we normally speak. You need to keep this secret. So keep is the right verb here. So this one is making sense. We have to see the uh, wrong spelling word. Okay, we have four words here: slaughter, cropping, trafficking, tyrannical. If you are not familiar with the meaning, slaughter मतलब जो काटते हैं, जैसे कसाई होते हैं वो, क्रॉपिंग मतलब कोई चीज फसल काट रहा है, क्रॉपिंग द क्रॉप्स। ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकिंग होती है जैसे स्मगलिंग करना थी ना, ट्रैफिकिंग द पीपल और चिल्ड्रन फॉर एग्जांपल। और ट्रेनिकल होता है somebody who is very cruel. So if you look at all the four words, I think this word is wrong here. What is the mistake here? I think one I is missing here. There has to be trafficking, right? So this is the right option. It has a mistake in spelling. Select the most appropriate meaning of the underlined idiom that can be substituted in the following sentence. The question is, he was murdered in cold blood. Okay, murder in cold blood. Let's see the options first. A option, in cold weather, deliberately, when blood was cold, or regretfully. So this is again a very common idiom that normally people use, especially used in crime situation, that the person was murdered in cold blood, मतलब he was murdered on purpose, जानबूझ के इसको। So if you look, not in cold weather, not cold blood, not जानबूझ, ठीक है। Next one is, we have to rectify the sentence by selecting the correct spelling of the underlined word. Okay, so we have a question in which we have a spelling mistake. The question is that David was put off by the glamming eyes in the dark. Glamming eyes, basically they are trying to say glamming eyes. We don't associate this word with eyes, glamming. We have to see the right word. First is glamming, spelling mistake is here, gleaning, gleaming, or gleaming. So eyes, the word we have to choose which should be associated with eyes. So normally we speak that the lady has very gleaming eyes. Gleaming is something shining, right? So this is the right option here, gleaming. And for those who are not familiar with this word gleaning, gleaning means to collect something, to gather something. Cannot be used here. Gleaming eyes is the right option. Select the most appropriate option to fill in the blanks. The planets are dashed around the sun. In a very common situation we come across in our daily life. Option है revolving, circling, rotating, rounding. तो planets क्या करते हैं around the sun? ये revolve करते हैं, वो circle करते हैं, rotate करते हैं, rounding करते हैं. So let us understand the difference first of all. ठीक है? Rotating, for example, rotating आप कब use करोगे? When somebody is rotating at one place, इसको बोलते हैं वो अपनी axis पे rotate करता है, जैसे Earth is rotating on its axis, तो वो एक ही जगह पे घूम रही है, ठीक? So this cannot be the right answer. So normally we say the planets are revolving around the sun. Should be revolving around, right? Not rounding, not circling. Revolving is the right choice.
The following sentence has been divided into parts. One of them may contain an error. Select the part that contains the error from the given options. Okay, we have been given a sentence. We have to find the mistake if there is any. The question is, the child was gazing longingly at the toy. We have three parts here. First is, the child was gazing longingly at the toy. If you see the first part, अगर आप first part को देखो ध्यान से, the child was is absolutely right. इसमें कोई mistake नहीं है. This is fine. Gazing longingly, I will talk about it in just a while. At the toy, again the right preposition is there. At the toy, that is also right. Gazing longingly. Gazing का मतलब होता है किसी को बड़े चाह से देखना. There is a word called staring. There is a word called gazing. Staring मतलब when you look at somebody with anger, that is staring. Gazing when you look at something or somebody with interest, बड़े ध्यान ना देखना, बड़े चाह ना देखना, ठीक. तो वही मतलब इत्थे हैगा कि बच्चा बड़े प्यार ना बड़े चाह ना टॉय ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ. Longingly ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਰਸਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਲਲਚਾਈ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਦੇਖਣਾ, ਠੀਕ. This one is also fine. So I think the complete sentence is fine. There is not any mistake. The right answer should be no error. Next one is, a sentence has been given with a blank to be filled with an appropriate word, and we have to choose the correct alternative. So statement is, if you are the one who is planning to lose weight, remember to keep your snacking dash. वो कह रहा है कि अगर आप अपना वेट घटाने की सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए? स्नैक के क्या करना चाहिए? ज़्यादा खाने चाहिए? नहीं, हमें कम करने चाहिए. तो आउटगोइंग इज नॉट मेकिंग सेंस हियर. Prejudice is not right here. We have two options, uncontrolled and moderate. Obviously, if you are trying to lose your weight, you can't have uncontrolled snacking. ना ये तो हो नहीं सकता. So moderate is the right. Yeah, moderate में in a limited quantity. Okay, all right. The next question is from next questions are 21 to 25. 5 questions हैं. क्या कह रहा है? In the following passage, some words have been deleted. Okay, कुछ words इसमें delete किए गए हैं. We have to read the passage carefully and select the most appropriate option to fill in each blank. Okay, so we have a question from 21 to 25 and some options are given which need to be refilled appropriately. So first question है 21 कह रहा है, if writers only dare to dare, a Suetonius or a Tacitus of the novel could exist, for the novel is a dash of the history of manners turned into a story and a play. Okay. So I can understand there are few technical words maybe are used which students may not be familiar with. So let me explain. If writers only dare to dare, अगर writers ने हिम्मत करी होती, these are basically name of some historians, right? They could exist. अब if you notice one thing, there is a comma and after comma the preposition for. But you need to bear in mind, अगर आपको comma के बाद for नजर आए, then it doesn't act as a preposition, it is acting as a conjunction. And as a conjunction, the meaning of this word is because. Please remember this tip. अगर जब भी आपको comma के बाद ये for word नजर आए, it doesn't serve as a preposition, it will act as a conjunction. और as a conjunction इसका मतलब होगा because, right? So because the novel is dash the history of manners. Options are optionally, needlessly, essentially, unnecessarily, right? So again, if you try to understand the gist of these sentence, अगर आप इसको समझने की कोशिश करो, वो क्या कह रहा है कि because के novel क्या है, they are the is dash the history of manners. Obviously, by reading novels, you get to know about the history of everything. तो वो कह रहा है novel is optionally is not making sense, needless is not right. This one, because novel is essentially the history of manner, because by reading novel we get to know about the history of certain thing. So novel is essentially the history of manners turned into a story and a play, as is history itself often enough. Next sentence is, and there is no other dash than this, and there is no other dash than this, that तो देखते हैं, and there is no other dash than this. Options are, and yeah, there is no other dash than this. Options are difference, pragmatism, matter, sample. So for those who are not familiar with pragmatism, that is practicality. That is what it means. But यहाँ पे क्या सेंस बन रही है?
वो उसने बोला कि नॉवल इज एसेंशियली द हिस्ट्री ऑफ मैनर्स एंड देयर इज नो अदर, और इसके अलावा और कोई फर्क नहीं है. So if you look at all the options, we have this, and there is no other difference. ऐसे बोलते हैं ना, there is no other difference than this, that the novel cloaks its manner dash the disguise of invented characters. Okay, novel cloak का मतलब यहाँ पे कवर कर लेना, ढक लेना किसी चीज को. It cloaks its manner dash the disguise. disguise होता है किसी चीज की आड़ में. ठीक है, ऑप्शन देखते हैं. तो क्लोक्स इट्स मैनर डैश द डिस्गाइज ऑफ इन्वेंटेड कैरेक्टर, कि किसकी आड़ में वो कवर कर लेता है. अब दिस इज वेरी फेमस कोलोकेशन. हम बोलते हैं यू आर स्टैंडिंग हियर अंडर द गाइज ऑफ. दिस इज वेरी कॉमन इंग्लिश. So please remember, with this word, this noun disguise, we always use the preposition under the disguise. उसकी आड़ में. We have not beside, not around, not among, obviously not. So it is under the disguise of invented character. Next one is, while the other comma history comma dash names and addresses. History dash names and addresses. History provides, history negates, history removes, history strangulates. Obviously, when by reading a history, you get to know about different names and addresses. So history क्या करती है? It provides names and addresses. So I think this one is the right option. Strangulate means किसी का गला दबाना. It doesn't make sense here. Remove is not right here. Negates is not right here. Let me tell you one thing. See, all these options are grammatically fine. They are not making any grammatical error. We can fit here grammatically, they can be fitted here, but the problem is that as per the paragraph, the sense of the paragraph, this one is the most appropriate option provides. The last one is, only the novel dash much deeper than history. Only the novel dash. Answers are bargains, listens, probes, imbibes. So if you read the full paragraph once more, let me read it out. If writers only dare a Suetonist or a Tacitus of the novel would exist, because the novel is essentially the history of manners turned into a story and a play, as is history itself often enough. And there is no other difference than this, that the novel cloaked its manner under the disguise of invented character, while the other, history, provides name and addresses. Only the novel dash much deeper than history. तो सिर्फ novel ही है which goes deeper, right? अब इसमें क्या देखो, bargains obviously is not making sense here. This is quite irrelevant option here. Listens, novel don't listen actually. This is not the right here also. Probes and imbibes. Probes का मतलब होता है किसी चीज की जांच करनी, ठीक है, जिसमें probe चलती पई है. Imbibe होता है कोई चीज ग्रहण करना, accept करना. So this one is, I think, making more sense. The novel probes much deeper, inquires much deeper. So this one is the right. Probe is the right one. Okay. So this brings me to the end of this question paper. I hope with all the tips and tricks जो मैंने आपको बताए हैं, those will be helpful and beneficial for you. So please use those tips and tricks. And again, once again, I want to reiterate my point. Okay, if you want to solve the synonyms, the antonyms, the idioms, please start improving your vocabulary, because this will really give you an edge over the other student if you want to crack the exam. Okay, till then, take care and thanks for watching the video.